Hi student, today we are starting with the new topic form. HTML form are required when you want to collect some data from site visitor. For example, during user registration, you would like to collect the information such as name, email, address, etc. The form tag is used to create an HTML form and it has a following syntax. Form action equal to script URL method equal to get or post. Form element like input, comma, text area, etc. Form close. Attribution of form tag. First, action. The attribute used to specify the location, path or URL of the server where form information is to be submitted. Next, name. The name attribute is used to assign the name of the form. Next, method. Method are the two types, get or post. Both the method are used to transfer the data from client machine to the server machine in a HTTP protocols. The difference between get or post. Get method is a non-secure method and in post method is a secure method. Get request have a length restriction. Post request have no restriction on data length. HTML form controls. There are different types of form control that you can use to collect the data using HTML form. First, text input control, checkbox control, radio box control, select box controls, file select box, hidden controls, clickable buttons, submit and reset button, etc. Attribution of input tag. First, type. It indicates the type of form object like text box, radio, submit, reset, checkbox, etc. Next, size. The attribute assigns the limit to display the size of text box. Example, input type equal to text, name equal to XYZ, size equal to 35. Maximum length allows specifying the maximum number of characters a user can enter into the text box. Example, input type equal to text, name equal to XYZ and maximum length 3. Next, name. It is used to assign the name to the text box for processing of the information contained in the text box at the server end. Next, value. It is used to assign the default value of text box. Text. The attribute is used to default selection of radio button and checkbox. Text input control. There are three types of text input controls. First, single line text input control. This control is used for items that required only one line of user input such as search box or name. They are created using HTML. Example, input type equal to text, tag. Next, password input control. There is also a single line text input, but it marks the character as soon as a user enter it. They are also created using HTML. Input type equal to
password tag. Next है multi-line text input control. This is used when the user is required to give the details that may be longer than a single sentence. Multiple line input controls are created using the HTML text area tag. जैसे हम कमेंट्स के लिए यूज करते हैं, एड्रेस के लिए यूज करते हैं. नेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स. अब एक प्रोग्राम रन कर रहे हैं. HTML हेड, टाइटल टेक्स्ट बॉक्स, टाइटल क्लोज, हेड टैग क्लोज, बॉडी टैग ओपन, फॉर्म टैग ओपन. क्योंकि हम लोग यहाँ पे फॉर्म कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे फॉर्म टैग का यूज किया है. In a form tag, we use a first name, input type equal to text, name equal to first name, BR tag क्योंकि न्यू लाइन पे प्रिंट होना चाहिए, last name, input type equal to text, name equal to last name, form tag close, body tag close, HTML close. ये हमारा आउटपुट होगा. फर्स्ट नेम टेक्स्ट बॉक्स, लास्ट नेम टेक्स्ट बॉक्स. नाउ सेकेंड पासवर्ड और इनपुट कंट्रोल. इसका प्रोग्राम HTML head. Inside the head tag we open the title, password input control, title close, head tag close, body tag open, form tag, यूजर आईडी. इसके लिए हम लोगों ने इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट लिया है, नेम इक्वल टू यूजर आईडी, BR टैग, पासवर्ड, इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड एंड नेम इक्वल टू पासवर्ड, फॉर्म टैग क्लोज, बॉडी टैग क्लोज, HTML क्लोज. दिस इज योर आउटपुट. नेक्स्ट text area. HTML head, title, text area, title close, head tag close, body tag open, form tag open, description, BR tag, text area rows equal to 5, calls equal to 50, name equal to description. क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने टेक्स्ट एरिया लिया है, डिस्क्रिप्शन लेंथी होता है. एंटर डिस्क्रिप्शन हियर. टेक्स्ट एरिया क्लोज, फॉर्म टैग क्लोज, बॉडी टैग क्लोज एंड HTML क्लोज. सी दिस आउटपुट. चेक बॉक्स. HTML tag, head tag, title checkbox control, title close, head tag close, body tag open, form tag open, input type equal to checkbox, name equal to Monday, again same as Tuesday, form close, body tag close, HTML close. This is your output. Monday or Tuesday. Next, radio button. HTML head, title, head tag close, body tag open, form tag open, input type equal to radio, name equal to gender क्योंकि यहाँ पे रेडियो बटन यूज हो रहा है तो नेम इक्वल टू जेंडर, वैल्यू इक्वल टू मेल, BR टैग, इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, नेम इक्वल टू जेंडर, वैल्यू इक्वल टू फीमेल, फॉर्म टैग क्लोज, बॉडी टैग क्लोज, HTML क्लोज. ये हमारा